relative analysis using ratios. Ratio is a comparison of two amounts. That is, if we relate or divide one amount with another amount, we get a ratio. But which amount should be divided by another amount to get a certain ratio is a question that is pertinent to this financial analysis. यानी हम बहुत सी फिगर्स, बहुत सी अमाउंट्स जो कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होती हैं, उनको वन बाय वन देखते हैं और ये देखते हैं कि किस तरह हम अगर इन्हें दूसरी अमाउंट से रिलेट करें तो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है. सो with the passage of time, we have come up with several ratios that are used in financial analysis. These ratios are related to different areas of a business organization. For example, अगर हम देखना चाहते हैं कि कोई कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है, तो हम रेशोज के ज़रिए देख सकते हैं. रेशो हमें एक relative analysis देता है. The difference between relative and absolute analysis is कि अगर मैं ये कहूँ कि किसी बिजनेस या कंपनी का प्रॉफिट कितना है, so the answer will be in absolute terms. यानी for example, rupees 1 million or 2 million or any amount. लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, तो प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज की टर्म्स में बताई जाएगी या रेशो की टर्म में बताई जाएगी. So profitability cannot be in rupees or dollars. So it is important to have a certain amount of profit or to know what is the amount of profit, but it is also very important to know that what is the percentage of that profit in relation to something else. यानी for example एक रेशो जिसे हम रिटर्न ऑन इक्विटी का नाम देते हैं, जिसमें हम प्रॉफिट को इक्विटी की अमाउंट से रिलेट करके ये देखते हैं कि हमारे पास क्या रेशो आई है. लेट्स सपोज दिस रेशो इज 1/5 और इन अदर वर्ड्स इट इज इक्वल टू 0.20 या 20%. तो ये 20% रेशो हमें ये बताती है कि बिजनेस ने इन्वेस्ट की गई इक्विटी के ऊपर 20% प्रॉफिट अर्न किया है. So knowing that the amount of profit was 1 million was not enough. हो सकता है कि 1 million amount of profit जो है वो इक्विटी के साथ रिलेट करके 5% बने या 10% बने या 20% बने. So you cannot say just by looking at an absolute figure whether that amount or that figure is good or bad. It is actually relating that figure with some other figure, that is calculating a ratio or converting it in a ratio that helps us analyze and make decision about the performance or the position of a business. So ratios actually help us to determine whether the business is working up to the mark or not. इन ratios के लिए हम मुख्तलिफ standards या जिसे हम कहते हैं बेंच मार्क्स भी सेट करते हैं ताकि हम ये कंपेयर कर सकें कि क्या हमारी प्रॉफिटेबिलिटी अप टू द मार्क है, क्या हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा है या जितनी ज़्यादा होनी चाहिए थी उतनी है या नहीं, या हमारी प्रॉफिटेबिलिटी हमारे कंपेटिटर के मुकाबले में कम तो नहीं है. सो हम इन रेशोज़ को मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करते हुए बिजनेस के मुख्तलिफ एरियाज़ की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को हाईलाइट करते हैं. Then we also have to maintain these ratios in order to stay at a certain level of performance. That is, if we want to keep the liquidity at a certain level, so we need to have the ratio up to a certain level. Similarly, if we want to retain the debt or equity, or in other words, the leverage of a company at a certain level, so we need to maintain that level. यानी ratios को
हम एक ख़ास लेवल पे रख के अपनी परफॉर्मेंस को एक ख़ास लेवल पर मेंटेन कर सकते हैं। ये काम एब्सोल्यूट एनालिसिस से नहीं किया जा सकता, यानी रिलेटिव एनालिसिस ही हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिसकी बेसिस के ऊपर हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि किस एरिया में हमारी परफॉर्मेंस डिटेरियोरेट की है और किस एरिया में हमारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव की है। सो रेशियो एनालिसिस इज वन वे ऑफ एनालाइजिंग आवर परफॉर्मेंस, comparing our performance and helping us make the decisions regarding investment and others. There are different groups of people who are somehow related to a business or a company. For example, the first one are the shareholders, who are the owners of the business. So owners of the business, the shareholders, do not directly take part in the business operations, but they are the owners, they are the risk takers, and they want to know how well the company or the business is doing. So there are several ratios which help them understand and analyze whether the company or the business is doing well or not. Similarly, there is a group of people who lend money to a business, जो business को loan देते हैं, financing provide करते हैं, that is banks and other financial institutions. So they also need to cover their risk and see whether the business is operating up to the mark or not. They also need to use various ratios to find out whether the business or the company is up to the mark or not. ऐसे ही बहुत से गवर्नमेंट के इदारे हैं, जैसे टैक्स के इदारे हैं या सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन है या और इदारे जो किसी न किसी तरीके से बिजनेस के साथ वाबस्ता होते हैं, वो भी इन रेशोज़ के ज़रिए बहुत सी यूज़फुल इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं और अपनी डिसीजन मेकिंग के अंदर उसको इस्तेमाल करते हैं. द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, द पीपल हु मैनेज अ बिजनेस on behalf of the owners or the shareholders, are actually those people who need to know whether their performance is up to the mark or not. यानी क्योंकि उन्होंने शेयर होल्डर्स के बिहाफ पर फैसले लिए होते हैं और डिसीशंस किए होते हैं, so their performance also has to be seen, and that is what we say the ratios which are related to the management of the company. Then there are groups of companies which analyze the performance and evaluate the performance of companies and businesses and rate them and rank them, जिनको हम rating agencies का नाम देते हैं. Rating agencies also make use of several ratios to decide about the rating of the companies and ranking of the companies. Auditors, internal auditors, external auditors, and all these are different groups of people and businesses and organizations which are somehow related to a particular business entity, and they make use of these ratios and relative analysis to make their decisions and to analyze the performance of a company.